We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. ठीक है, हमें वो बुक लेके यहाँ वापस आना है. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. ठीक है. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, कैसे हैं आप सभी दोस्तों. मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन जरूर कर रहे होंगे. मैं स्कार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हॉगवर्ट्स लेगेसी के एक और नए एपिसोड में. तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने फॉरबिडन फॉरेस्ट के उस गुफा के रहस्य को सुलझा लिया था और लाइब्रेरी में मिली उस मैजिकल बुक के खोए हुए पन्नों को भी उस गुफा से ढूंढ निकाला था. इसके बाद दोस्तों हम लोग हॉगवर्ट्स वापस आ चुके हैं और अब हम लोग प्रोफेसर फिक का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम लोग उन पन्नों को उन्हें दे सकें. इसके बाद दोस्तों हमें ये मैजिकल बुक लेकर वापस उस गुफा में दोबारा जाना है जहां पर हम लोग तभी जादूगर अकेडमी से आगे की बातें कर पाएंगे. और इस दौरान दोस्तों जब तक प्रोफेसर फिक वापस नहीं आते तब तक हम लोग अपनी हॉगवर्ट्स की मैजिकल स्पेल्स की क्लासेस लगाएंगे. और इसी सिलसिले में दोस्तों आज हमारी पहली फ्लाइंग क्लास है. हम लोग अपनी जादुई छड़ी लेकर दोस्तों आज उड़ने वाले हैं. तो चलिए दोस्तों फटाफट से आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे हॉगवर्ट्स लेगेसी की पहली फ्लाइंग क्लास कैसी रहती है. ओके, अभी रात को ही फ्लाइंग क्लास शुरू हो जाएगी क्या? नहीं, सुबह करनी पड़ेगी हमें. ओह देखो, ये हमारे जादुई झाड़ू रखे हुए हैं. शिट. हाँ, सुबह होगी, सुबह करेंगे हम लोग क्लास. ये चलिए, बढ़िया. सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं. ओह ये देखो, ये सर्कल्स. शुरू करें फिर अपनी क्लास. Let's begin. Everybody grab a broom and we shall get started. Okay. भाई साहब. Mr. Clopton, your attention please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. भाई हमने तो चलाया नहीं है, आज तो हमारी पहली क्लास है. Step up to your broom. Say up firmly and clearly. Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up. ओह बाय. Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom! सही भाई, खतरनाक. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. ओह. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. ठीक है. ओके, फ्लाई थ्रू द रिंग्स. ओके चलिए. ओ भाई. I think I'm getting the hang of this. This'll take some getting used to. अरे ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है भाई. चलिए, ये तो हो गया. नाउ व्हाट? Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, ठीक shall है, we? चलिए. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. ठीक है, अब हमें थोड़ा सा वो हम तेज चला सकते हैं इसे. चलें फिर. चलिए. हाँ. ओह भाई साहब. What a view! व्यू देखिए. ओह Nice day for a flight. व्यू देखो गाइस. चलो, हमें नीचे जाना है.
ओ भाई Brilliant. सही है. The old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. यार बहुत सही है भाई. बट स्पीड थोड़ी और होती तो मजा आता. अभी मुझे लगता है बिल्कुल बेसिक सी ब्रूम होगी ना, इतना फास्ट नहीं Our है. aquatic resident likes to make an appearance once in a while. भाई कहाँ घुमा रहे हैं हमें यार. कितना सही है ना यार. They did. Did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? ठीक है, चलिए ट्रेनिंग तो हो गई हमारी फ्लाइंग. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. ये पंगे करवाएगा देखना, मना किया था टीचर ने. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. ठीक है. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? पंगे तो लेने में हम लोग हमेशा ही आगे. हम लोग करने वाले हैं चीज की, बट टीचर ने मना किया था. बाहर पे जाए. क्या लिखा होता है? I like the sound of that. चलिए करते Can't say हैं. no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Shit. टीचर ने मना किया था, हम लोग The tour पूरे is प्रॉब्लम about फंसने to वाले हैं. begin. Follow closely now. ठीक Right है. now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. ओ भाई. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. ठीक है. स्पीड बस. Now that's more अच्छा, जैसा गाड़ियों में होता नहीं है बूस्ट टाइप, वैसा ही. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. Woo! And the owl. Oh shit. That's a bit of solid architecture, Muझे लगा- isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. ओ भाई मजा ही आ गया आज तो कसम से यार. ओह. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. अच्छा उन्होंने बुला लिया, टीचर ने बुला लिया. डांट पड़ने वाली है, बहुत बुरी वाली. Like we've already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. भाई कसम बता रहा हूँ मजा ही आ गया. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. चलो बढ़िया है. हमारी ब्रूमस्टिक हमें मिल चुकी है. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Definitely worth it, bro. It was worth losing a few house points for that detour.
You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. ओके गाइस, मुझे लगता है हमें हॉग्समीड जाना पड़ेगा. फ्लाइंग क्लास की तो हमारी क्वेस्ट कंप्लीट हो गई. ठीक है. ओके, हमें अपनी ब्रूम स्टिक लेने के लिए जाना पड़ेगा. भाई हमारे पास पैसे भी है इतने कि हम लोग ब्रूम स्टिक खरीद सकें. एक मिनट, पहले अपनी क्वेस्ट एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि हमारी जो अगली क्वेस्ट है ना, वो हमें वहीं पे जाना है, हॉग्समीड पे जाना है. प्रोफेसर शार्प वांट्स मी टू टेस्ट माई सेल्फ व्हाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द मैक्सिमा एंड एड्यूरस पोशंस. ही ऑल्सो लाइक मी टू फील्ड टेस्ट फोकस पोशन. I know to find potions and recipes at GP Pin's Potions. My field guide will not guide me through this assignment, but my map and could still prove useful. Acquire and use a focus potion. Acquire maxima and adurus potions and use them simultaneously. Okay? ठीक है, चलिए ये टास्क करते हैं गाइस. और उसके बाद हम लोग जाएंगे हॉग्समीड और वहाँ पे अपनी जादुई झाड़ू भी लेंगे. ठीक है, ये बोल रहा है acquire and use a focus potion. शायद मेरे पास पड़ा भी हुआ है यार फोकस पोशन, मैंने खरीदा था. रेसिपी, ये कौन सी पोशन है? मैक्सिमा. एड्यूरस पोशन भी पड़ा हुआ अपने पास. फोकस पोशन नहीं है मेरे पास. हाँ, ये परचेज द रेसिपी फोकस पोशन जीपी पिंस. गाइस हमें हॉग्समीड जाना ही पड़ेगा. ठीक है, चलिए चलते हैं हॉग्समीड. ये रहा, यहाँ जाना है हमें. ठीक है, चलिए यहाँ तो पहुँच गए हम लोग पोशंस की दुकान पर. चलते हैं अंदर. Hello there. In the market for potions, are we? एक मिनट सर, ये जरा मुझे, अरे ठीक है, चलिए फोकस पोशंस What can I बाय. do for you today? सर मुझे फोकस पोशंस चाहिए, प्लीज दे दीजिए. अरे फोकस पोशंस दिख नहीं रहे. What the hell? पोशंस रेसिपी, इनविजिबिलिटी. ठीक है, 1200 का. अरे भाई तो पैसा पूरा ख़त्म कर देंगे मेरा. ठीक है, पहले तो मैं सेल आउट कर देता हूँ चीज़ें. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now. नहीं वो तो ठीक है. एक मिनट, मुझे ना, मैं गाइस एक चीज़ करता हूँ, पहले देख लेता हूँ कि जो वो जादुई झाड़ू वाली जो दुकान है ना, कितने का है वहाँ पे. एक मिनट, यहाँ पे शॉप ढूंढनी होगी मुझे पहले ना. ये है ब्रूड एंड बैक. जादुई झाड़ू की दुकान कहाँ हो सकती है? हॉक्स हेड, टॉम्स एंड स्क्रॉल्स. फ्लाइट टेस्ट. ओ यहाँ पे कुछ है, ये देखो. आफ्टर कटिंग ब्रूम फ्लाइट ट्रेनिंग इन मैनुंगा फ्लाइंग क्लास इफ चेकिंग इन. हाँ, ये इसको ट्राई करते हैं गाइस पहले एक बार. ये है वो ब्रूम शॉप ना. ठीक है. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. अरे ऐसा मत बोलो यार. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Yes sir. Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. ठीक है, बढ़िया. I will have a look, definitely. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. What are we looking for today? ओ देखो कितने महंगे हैं. नहीं, सस्ते हैं.
सब सस्ते ही हैं। ओके, ये है द परफेक्ट ब्रूम फॉर दोज विद अ फेयरी टेम्परामेंट, a broom enchanted to celebrate your particular Hogwarts house pride. Finally crafted from ash, this broom is built for stability. A stylish broom with light touch, quite literally. And a comfortable and speedy broom with a unique woven design. That item is of the highest quality. ठीक है, ये वाला जो है ये स्पीड के ऊपर है, हाँ स्पीडी ब्रूम लिखा हुआ है ना, और ये वाला है That item is of the highest quality. stylish broom with a light touch, quite literally. और है कितना प्यारा देखो, ठीक है। Ash, this broom is built for stability. ये stable है। Moon Streamer Broom, Hogwarts House Broom. That item is of the highest quality. A broom enchanted to celebrate your particular Hogwarts house pride. ठीक है, I think ये ग्रिफिंडोर का ही है, ये देखो ना, ये साइन भी बना हुआ है इस पे। और जो ब्रूम ये वाला है, the perfect broom for the highest quality. those with a fiery temperament. ये भी अच्छा लग रहा है मुझे। कौन सा लिया जाए? मुझे इन दोनों में से कोई बढ़िया लग रहा है। एक ये है और एक ये है। That item is of the highest quality. A comfortable and speedy broom with a unique woven design. ठीक है। The perfect broom for those with a fiery temperament. चलिए गाइस, मुझे लग रहा है मैं ये लेना सोच रहा हूँ। You'll be thrilled with that broom, I promise you. बढ़िया। Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. ठीक है। You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right Enhancements. about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. ठीक है। I have some ideas for enchantments, upgrades if you will, that will improve the performance of any broom you fly. बढ़िया। What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. ठीक है। If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? I'm ready. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. सही है। The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. ठीक है। Once अच्छा। you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Okay. ठीक है गाइस, हमें एक ये वाला मिशन भी करना है, Mr. Weeks' enthusiasm. उससे पहले हम लोग वो वाला मिशन कर लेते हैं जिसके लिए हम लोग आए, वो पोशंस खरीदते ना, वो कर लेते, क्योंकि फिर वापस हॉग्समीड आना पड़ेगा हमें वैसे, पर अभी आए हैं हॉग्समीड में तो वो चीज़ कर ही लेते हैं। अब मुझे लगता है वही यहाँ से पोशन खरीद के ना हमें वापस से कुक करना पड़ेगा, जो हमारी वो, अरे क्या हो गया, वो कौन सी क्लास थी ना पोशंस वाली, मिस्टर ब्लैक की क्लास थी शायद, प्रोफेसर ब्लैक की थी वो क्लास, वहाँ पे जाके हमें बनाना पड़ेगा इसे। Healing potions are a speciality here, should you need any. सर मुझे फोकस पोशन की रेसिपी दे दीजिए प्लीज़। What can I do for you today? एक मिनट, कुछ और ऑप्शन आ रहा था, एक मिनट देखूं जरा, एक मिनट रुको। I hope to see you again. Farewell for now. You need help with the delivery. अच्छा ठीक है, तो साइड मिशन ये नहीं करना मुझे। What can I do for you today? सर मुझे ये चाहिए। A wise decision. Thank you. वाह गॉड, 1200 रुपये ले लिए। ओके। I hope to see you again. Farewell for now. न्यू आइटम अनलॉक्ड, ठीक है। फोकस पोशन ये रहा, इसके लिए मुझे लेस विंग्स फ्लाइज चाहिए हैं, फ्लक्स फीट स्टेम और डुपॉक टोंग। अच्छा ठीक है, ये चीज़ें मुझे खरीदनी पड़ेंगी गाइस। और ये कौन सा है? ये एड्रेस पोशंस, ये मेरे पास पड़ा हुआ है ना शायद। एड्रेस पोशंस मेरे पास पड़ा हुआ है और मैक्सिमा भी पड़ा हुआ है, ठीक है। acquire maxima and address potion and use them simultaneously. ठीक है, वो हो गया। अब हमें फोकस पोशन का सामान लेना है। एक मिनट देखो ना, ये रहा ना फोकस पोशन, इसके लिए हमें चाहिए लेसविंग फ्लाइज पड़े हुए हैं, फ्लक्स फिट स्टेम और ड्यूपॉक टंग। यहाँ पर एक है जिनके पास हम लोग ले सकते हैं उस चीज़ को।
प्लग स्पीड स्टेम चाहिए ना मुझे, प्लग स्पीड स्टेम, हाँ ये तो मिल गया, चलो। Now, you let me know if there's anything else I can help you with. अरे बस एक मिनट रुको। No one can say I don't keep a stacked shelf. प्लग स्पीड स्टेम ठीक है, 2 हो गए मेरे पास। डुबॉक टंग कहाँ मिलेगा यार, अब ये चीज़ कहाँ मिलेगी? यहाँ पर ये टंग तो नहीं थी In the यार। market for potions, are we? हाँ सर, वो मुझे What can I do for you today? मॉन्ग्रेल फर, स्ट्रेंच, स्पाइडर फैंग्स, नहीं भाई इनके पास। हाँ ये डक बॉक टंग, यही तो चाहिए मुझे, एक ही चाहिए। A wise decision. अरे मिल गया गाइस, मिल गया, ठीक है। तो अब हमें इसे हाँ नहीं, हमें इसे कुक करना होगा भाई। ब्रिंग टाइम 1 मिनट, ठीक है। हमें वापस पोशन क्लास पे जाके इसे कुक करना होगा, ठीक है। चलिए फोकस पोशन मिल चुका है। अब मैं एक काम करने वाला हूँ गाइस, चलिए क्या वापस, या फिर मैं एक बार यहाँ पे ना एक विजर्ड्स के मतलब ड्रेस की स्कूल है, वहाँ चले, कपड़े वगैरह देखे थोड़ा। चलते हैं हॉग्सवर्ड और फिर वहाँ पे अपनी फोकस पोशन को बनाते हैं सबसे पहले तो। उसके बाद जाएंगे हम लोग क्विडिच फील्ड में, वहाँ पर जो मिशन है वो कंप्लीट करेंगे ताकि हम अपने ये जो जादुई झाड़ू है उसमें कुछ अपग्रेड्स कर सकें। यार ये झाड़ू मिल गया ना, बड़ा सही हो गया, मतलब आने जाने का काम ना। अरे मेरा पॉट किधर है? हाँ मेरा यहाँ पे है। चलिए हमें बनाना है फोकस पोशन ये रहा, सारा सामान अपने पास पड़ा हुआ है। चलिए 58 सेकेंड्स में बन जाएगा गाइस। कितना टाइम रह गया? 5 सेकेंड्स, बढ़िया, बस होने ही वाला है गाइस। चलिए ये भी हो गया। अब हमें फोकस पोशन लेना है और उसे यूज करना है। Excellent. ठीक है, अटेंड पोशन क्लास ड्यूरिंग द डे, ठीक है। अच्छा वो हम बाद में करेंगे, पोशंस क्लास का काम बाद में करेंगे। ओह ऑटोमेटिकली हो गया क्या? चलो ठीक है। इस क्लास को कंप्लीट करने पर ना हमें कुछ मिलना था। ये देखो, ये क्या चीज है? पता नहीं क्या चीज थी वो। अटेंड, ठीक है, हमें मुझे लगता है इनसे बात करनी होगी सर से। How are your assignments coming along? मजेदार सर, मजा ही आ रहा है, अब क्या बताऊं आपको। आप एक बार बैठिए, फिर आपसे बात करते हैं। Revelio. Oh, तो यहाँ पर एक ये भी मिल गया हमें। You know that potion making is delicate and as such requires great precision. I completed your assignments, Professor. इनके असाइनमेंट हमने कंप्लीट कर लिए। You should be ready to learn Depulso. Depulso. Let's see what you can do. Okay, now what is Depulso, man? Concentrate. Do not let your mind wander. ठीक है, एक नया मैजिकल स्पेल, बढ़िया। You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. ठीक है प्रोफेसर शापी, हमने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। 1 मिनट में पहले ये जो नया हमें मिला है इसे अपने उसमें इक्विप कर लेता हूँ। डिपल्सो, ये तो एक्सपेलियार्मस है। डिपल्सो ये है शायद। रिपेल्स मैनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ओ भाई ये, और ये कितनी सही है देखो। With considerable force, although it deals no direct damage to foes, enemies and objects alike can be launched into each other with destructive results. Also useful for pushing and spinning objects for a variety of purposes. Cool. I think मुझे लगता है इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है। Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. बढ़िया, ठीक है। चलिए ये वाली असाइनमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। Now we have to head back. अब हम चलते हैं क्विडिच ग्राउंड में।
उफ यार भाई झाड़ू क्या मिल गया, अपने तो मजे ही लग गए। वहां जाना है देखिए गाइस हमें, और यहाँ पे हमारे शायद कोई रेसिंग वेसिंग होने वाली है। Hey you, Gryffindor. ठीक है। Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. ठीक I है। don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. हाँ, Tell that showing to off the तो नहीं rest कर of रहे the थे हम school. लोग। But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better चलिए, flyer. अभी I बताते हैं hold इसे। one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Slytherin versus Gryffindor. Let's go. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. वो तो वक्त बताएगा मैं मोहतरमा। ठीक है, करना क्या होगा? मैं टाइम ट्रायल है तो ठीक है। ओके। Made it! उससे स्पीड बढ़ रही है भाई, वो चीज लेनी है हमें। ओह शिट, मैंने मिस कर दी। हाँ ये देखो। Well, that's more like it. बढ़िया। Could have done better. One missed ring? Oh shit, shit. Did it! रिंग मिस मत कर भाई। रिंग रिंग रिंग। ओह शिट, मिस कर दिया रिंग मैंने। ठीक है, ये बबल सारे लेने पड़ेंगे अपने को। Brilliant! 2:20:53 है उसका बेस्ट टाइम ना। This is rather fun. रिंग मिस नहीं करना भाई, क्योंकि रिंग मिस करने पर ना पेनल्टी पड़ रही है गाइस। 127। लिविंग रेस ट्रैक नहीं कर रहा हूँ भाई, क्या कर रही हैं? हद हो गई। Made it! ठीक है, हे भगवान कर ले हम लोग। 157। लास्ट रिंग है गाइस ये। लास्ट रिंग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बढ़िया कर लिया हम लोगों ने। 29 2 मिनट 9 सेकंड में उसने। ठीक है, बढ़िया यार। 2 रिंग्स हमने मिस किए थे। चलिए ये तो हो गया। कहाँ है मैडम जी? आप बहुत बातें कर रही थी। That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Okay. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. ठीक है। You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. ठीक है,
Report back to the podium to challenge other racers and advance your way through the ranks of the leaderboard. ठीक है, ये काम नहीं करना गाइस, हमें जाना है LB वीक्स के पास, जिससे हम लोग वो ये जादुई झाड़ू लेके आए हैं ना. अब देखते हैं क्या अपग्रेड्स मिलते हैं हमें. Quest started. Professor Sharp assignment 2. क्या चीज़? Return to LB वीक्स. अभी वो बाद में देखेंगे. इसके बाद हम लोग मेन स्टोरी क्वेस्ट में भी कुछ ओपन हुआ है, वो भी करना है हमें. शायद मिसेस जो प्रोफेसर वीजली उनसे मिलना है, बट पहले ये काम करके आते हैं. ओह, ये देखो ये पेड़ कितना प्यारा है. ठीक है. लैंडिंग इज अनअवेलेबल राइट नाउ. ओके, यहाँ तो हो जाएगा. चलिए ते हैं. Oh, you're back. With something to report, I hope. हाँ जी सर, अपग्रेड्स के बारे में बताइए अब हमें. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. हाँ. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. ठीक है. अच्छा, अभी नहीं मिल पाएगा हमें, but जल्दी. How to address the issue of altitude as it relates to speed? ठीक है, फ्लाइट टेस्ट क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने गाइस. और ये तो मेन क्वेस्ट है गाइस. पहले ये वाला कर लेते हैं, अंडरक्रॉफ्ट. ठीक है, पहले यहाँ चलते हैं. हमें सेबेस्टियन से मिलना है. ठीक है. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. सही में, उसके बाद से मिले नहीं है लोग ना. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Undercroft? In the shadow of the Undercroft. कौन सी जगह ले जा रहा है भाई? There's a secret passage just here. It's well disguised. चाहिए. अरे तो सेबेस्टियन तो आया ही नहीं. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. अच्छा, आ चुका है वो. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. Definitely, वो तो है ही. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. सेबेस्टियन की बहन को भी बेचारा कोई दिक्कत है यार. उसको भी कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड कुछ होगा जरूर. एक बार रूम पर एक्सप्लोर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं. हाँ देखो ना, टॉक टू सेबेस्टियन के पास आ गया है ऑप्शन. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place?
No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Forbidden spells? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Blasting curse? A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. Confringo. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. एक नया spell, guys. It may take a while to get the feel for it. ठीक है? Mimic my wand movement. The incantation. The incantation is Confringo. Very well. चलिए अनलॉक तो कर लिया आप लोगों ने. एक नया स्पेल सीखने को मिल रहा है. ये कुछ खतरनाक लग रहा है मुझे. You're getting it? Ready to actually try it out? Why not? Stick to the targets though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. अच्छा रुको, मुझे वो मैजिक लेना भी तो पड़ेगा. कॉन्फ्रेंजो ये है ना शायद वो. Confringo. A long range bolt that deals damage on impact. Enemies hit with fire based attacks will continue to take damage for a few seconds, during which time collisions will result in incendiary burst. ओहो गजब. किस पे लगाएं इसे? मुझे लग रहा है ये सही इस पे है. एक सॉरी ये करना था मुझे. ठीक है. Confringo. ओके. इस पे बोल रहा है यूज करने के लिए. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. उसकी रेंज भी काफी है. That's it. I think I've got it. Well done. Incendio. ये इसको हटा सकते हैं हम लोग. इसकी जगह कोई और डाल सकते हैं क्योंकि मुझे अब ये नया फायर वाला मिल गया ना. देखो ना ये कितना सही है. Confringo. इसकी रेंज बहुत ज्यादा है. बढ़िया. ठीक है, सेबेस्टियन से बात करनी है हमें. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything हाँ I can वही मैं do. बोला था कि कुछ कर सकते हैं Perhaps हम when I लोग. next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. ठीक है, बढ़िया. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. ये तो अपना दोस्त ही है. आई होप. मुझे ऐसा लगता तो है बट पता नहीं. चलो बता देते हैं सच. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. वही मैं बोल रहा हूँ ना. You can trust me.
All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. थोड़ा बहुत कह सकते हैं. When you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. अच्छा, In the सही है. meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. सही बात है. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Definitely. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. ठीक है. हम फिर एन से मिलने जाएंगे वहाँ पर. हाँ. Hello, Sebastian. Wait. ओए. You there? ये I तो can hear you. Oh, ominous है. ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? ओहो, अब क्या करें? Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. अरे नहीं बता रहे भाई. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Sebastian सही बोल रहा है भाई. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. ओहो. Sebastian is going to get an earful about this. ओमिनस से तो कुछ अच्छी बातचीत नहीं हुई अपनी. ठीक है, ये वाला मिशन हमने कर लिया है. जा रहा है क्या अंदर ये? ओ चले गया अंदर ये तो. ठीक है, अब हमें प्रोफेसर वीजली से मिलना है यार. फटाफट करते हैं. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. तो प्रोफेसर वीजली ने यहाँ पर क्यों बुलाया? ये थोड़ा वेयर्ड हो गया. ओ ओ ओ ओ ओ हो. एक सीक्रेट दरवाजा. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं. अपने आप ही खुल गया था भाई ये दरवाजा. What is this place? This is the room Of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it.
There's no chance I'm clambering over this mess. Okay, मेरे पास वो मैजिक है ना. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco. ओहो, the एक नया vanishing spell. The You vanishing can spell. cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. ठीक है. एवेनास्को क्या करता क्या है ये स्पेल? क्योंकि एक मेरे पास एक दूसरा स्पेल है जो धक्का दे सकता था इस चीज को. Cast Evanesco on those chairs. वेट अ सेक मैम, पहले तो मुझे ये चीज अपने लिए लेनी पड़ेगी. ये अलाउ यू टू सी इन डार्क. नहीं, ये है ना वो vanishes items and गायब कर देता है ये चीजों को. ओके. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Revelio. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. ठीक है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं फिर. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. ओके. ये मून स्टोन्स में इकट्ठा कर रहा था. पता नहीं, प्रोफेसर विजली बोल रही थी कि इसका कुछ काम है. देखते हैं. और यहाँ पर कुछ चेस्ट पड़े हुए. ओके, एक मिनट. ठीक है, मुझे उस तरफ जाने के लिए चाहिए होगा ये. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Bit offended, the room thought needed a bath. Cheeky thing. ठीक है. Revelio. भाई कहाँ पहुँच गए? लाल लाल सा कैसे हो गया कमरा? क्या जगह है? How does anyone other than a house elf manage to get around in here? पता नहीं कहाँ ही चले जा रहे हैं भाई. Snitch. Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. मुझे लग रहा है मुझे लेविएसियो वाली जो स्पेल है ना उसको भी शायद यूज करना है. कुछ हो सकता है शायद. ओके. Confringo. हाँ. कैसे कैसे कैसे? नहीं, ये काम नहीं कर रहा है इस पे. ओके, यहाँ तो हम लोग जा नहीं पा रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है भाई इसको खींचना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, और मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा. मुझे लेविएसो वाला जो था ना अपना, आई थिंक ये है. हाँ, लूमोस है तो नहीं, लेविएसो ये है. ठीक है, और इसको ये करना पड़ेगा. नहीं जा रहा है. ठीक है, थोड़ा सा
दिमाग तो मैं सही लगा रहा हूँ बट इससे उठाना पड़ेगा। हाँ नहीं जा रहा। आया तो मैं सही हूं, उधर से भी रास्ता है। दिमाग तो मैंने सही लगाया बट क्या गड़बड़ हो रही है। चढ़ तो रहा हूं मैं ऊपर, नहीं उस तरफ नहीं जा पा रहा है। पता नहीं क्या चक्कर है। I hope that house elf can find us in here. Levioso. ओह, ये क्या है भाई? Revelio. ओह, डीक तो यहाँ पर है। Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. प्रोफेसर वीसली इसे भी ढूंढ रही थी, वो भी आ गई। Hello. Ah, Deek, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deek has been a friend since I was a second year. Oh, baap re. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deek, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deek's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. Achha. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. ठीक है? Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. भाई साहब, ऐसा रूम अगर रियल में होता तो क्या सोचेगी ये? भाई यार मुझे सही में मैजिक इसलिए तो पसंद है, बहुत अच्छा लगता है यार जो ऐसे चीज देखता हूँ ना मैं। Okay. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah! And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent! It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Desk of description. Use it to reveal the magical properties of any unidentified gear that you have collected. हाँ, मेरे पास जो वो कपड़े हैं ना, उसे चेक करते हैं. Tainted cloak. अच्छा ये जो मिला था, ठीक है. Okay. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Okay. ठीक है, एक मिनट, वो इसने वो आइडेंटिफाई कर लिया क्या वो चीज़ को ना? हाँ, कर लिया मेरे ख्याल से. हाँ, इसने कर लिया आइडेंटिफाई. ये था वो. Tainted cloak, offense 12. अपने पास सही है भाई कपड़े. ठीक है. अच्छा, अब हमें प्रोफेसर वीसली से बात करनी है. रूम ऑफ रिक्वायरमेंट. एक्चुअल में जब गेम शुरू होती है ना, तो गेम में हम लोग इसी रूम पे खड़े रहते हैं.
I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. ओहो कितने सारे स्पेल्स सिखा देना गाइस, कंफ्यूजन ही होने लगी अब तो। चलिए ये तो हमने अनलॉक कर लिया है। Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. ठीक है, conjuring spell, new spell unlocked. Okay. Conjure a potting table, conjure a potion station. अच्छा ये तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए। कोई भी कर सकता है ना इसमें। ठीक है, एक्स टू चेंज कलर। भाई क्या हो रहा है? ठीक है, ये सही लग रहा है। पॉटिंग टेबल, हाँ ये पॉटिंग टेबल्स अपने। Well done. ठीक है, ये हो गया। Use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. बहुत एक वो होता जा रहा है भाई। ठीक है। I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Quest complete. चलिए ठीक है, ये भी कर लिया हम लोगों ने। I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. ठीक है। Okay. The map chamber. Now that Professor Fig has returned, I'm excited to show him the missing pages and the secret map chamber I found below the school. ठीक है, और एक ये है। बहुत सारे असाइनमेंट्स खुल गए गाइस। ठीक है, यहाँ पर खत्म करेंगे गाइस, काफी कुछ कर लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट है दोस्तों, एक तो सबसे मेन चीज जो हमारी स्टोरी क्वेस्ट थी, जिसमें हमें प्रोफेसर फिग को वो खोए हुए पन्ने वापस करने थे, वो हम लोग करेंगे अब अगले एपिसोड में, वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बढ़िया। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। तो आज के एपिसोड में दोस्तों हम लोगों ने अपनी उड़ने वाली झाड़ू हासिल कर ली है और उसके अपग्रेड्स पर भी हमने काम कर लिया है। और जिस शॉपकीपर से हम लोगों ने ये जादुई झाड़ू ली थी, वो कह रहे हैं कि जैसे अपग्रेड्स आएंगे मैं तुम्हें मतलब अपडेट कर दूंगा और
मुझे लगता है शायद इन अपग्रेड से हमारी ये जो जादुई झाड़ू है शायद काफ़ी इसकी स्पीड वगैरह बढ़ जाए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे मिशंस हम लोगों ने किए और अपना एक लाइक रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में पहुंच गए, जो कि बड़ी ही मैजिकल सी एक कमरा था जहां पर हम लोग जो चीज़ भी चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। वो हमें वो चीज़, वो रूम हमें प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा दोस्तों अब अगले एपिसोड में हम लोग प्रोफेसर फिक के पास जाने वाले हैं, क्योंकि वो वापस हॉगवर्ट्स में आ चुके हैं और उन्हें हम लोग जो वो खोए हुए पन्ने फॉरबिडन फॉरेस्ट की गुफा से लेकर आए थे वो उन्हें दे देंगे और उसके बाद वो किताब लेकर हम लोग जाएंगे मैप चैम्बर में एक जादूगर रकैम से बात करने के लिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को हॉगवर्ट्स लेगेसी का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यारे लाइक्स, आपके प्यारे कमेंट्स और आपके प्यारे सब्सक्रिप्शंस मुझे बहुत हिम्मत देते हैं ऐसे अपलोड्स करते रहने के लिए। तो चलिए मिलूंगा आप सभी लोगों से अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।